नोट्स पहले लिखे हुए हैं क्योंकि बहुत सारा काम है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हो अच्छे से। और क्वांटम नंबर क्योंकि हमने पहले बनाए हुए नोट्स, उसको यूज करें। क्या करना है वो आप बोल देना बीच में। नोट्स लिखने हैं और अच्छे से, मतलब उसको स्पेशली सुनना ज्यादा है। दो चार पॉइंट मिस हो गए कोई बात नहीं, सुनने में अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वांटम नंबर जो हमें ये इंफॉर्म करता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैसी है, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि यू लिव इन एशिया कॉन्टिनेंट, है ना, इंडिया कंट्री, पर्टिकुलर स्टेट, और स्टेट में एग्जैक्ट कहाँ लोकेशन, है ना। या फिर ऐसे बोले कि सिटी का नाम, एरिया का नाम, घर का नाम, एंड घर में दो मेंबर है तो दोनों में से कौन से हो, तो दैट इज एक्सप्लेन बाय द क्वांटम नंबर। ठीक है, चार क्वांटम नंबर होता है। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बोहर भाई साहब ने दिया था। और वो बोले कि प्रिंसिपल क्वांटम में ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में, फर्स्ट शेल में, सेकंड में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, मोस्टली सेवन तक ही हो जाते हैं, है ना। शेल का नाम भी बताता है, ये के होगी, एल होगी, एम होगी या एन। और अगर हमें शेल का नंबर पता चल जाए तो ये भी आइडिया हो जाएगा, अगर वो न्यूक्लियस के पास होगा तो उसकी रेडियस डिफरेंट होगी। और अगर शेल मान लो फोर्थ है तो दूर है न्यूक्लियस से, तो इसका मतलब उसका साइज भी बड़ा हो। तो हम साइज का आइडिया लगा सकते हैं, और साइज के बेस पे एनर्जी का आइडिया लगा सकते हैं। ये एन की वैल्यू वन से लेके इन्फिनिटी तक कितनी भी हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली सेवन तक ही होती है। रेडियस निकालने का ये तरीका होता है। इसको अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं। मैं पर्सनली इसको रिकमेंड करता हूँ 53 पिकोमीटर एन स्केयर बाई जेड। ये मिनिमम रेडियस होती है, 53 पिकोमीटर। अब अगर ये खुद सोचो कि एन ज्यादा हो जाए तो रेडियस ज्यादा होगी, साइज बड़ा होगा। और अगर जेड ज्यादा हो गए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो इससे रेडियस कम होगी। एकदम लॉजिकल है कि डायरेक्टली डिपेंड अपॉन एन, मोर नंबर ऑफ शेल मोर साइज, मोर एटॉमिक नंबर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो साइज कम हो जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। 13.6 तो एक नंबर ही है, जेड स्केयर बाई एन स्केयर ज्यादा इंपॉर्टेंट। कि जितना ज्यादा जेड होगा तो अट्रैक्शन उतना ही स्ट्रांग होगा, तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, है ना। स्मॉलर साइज एटम ज्यादा स्ट्रांग होता है, और जितना दूर जाता जाएगा तो एनर्जी अफेक्ट होती जाएगी, तो उसके हिसाब से चेंज होती है। ये जब मैंने 13.6 बोला था, हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है। ये सबकी वैल्यू अलग अलग होती है, मैं मोस्टली कंफर्टेबल हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब ये यूनिट अगर चेंज हो जाएगी तो तुम्हें उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो दो इंपॉर्टेंट थिंग है, एक कि एनर्जी नेगेटिव होती है, और सेकंड 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और थर्ड यहाँ पे जेड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो यहाँ पे नंबर से ज्यादा ना डायरेक्ट रिलेशन का रोल है। जो रेडियस है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। ऐसे ही एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। इसका मतलब अगर एनर्जी इंक्रीज होगी, सॉरी एन इंक्रीज होगी, तो एनर्जी डिक्रीज होगी नेगेटिव में, है ना। नेगेटिव में डिक्रीज होगी मतलब ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, है ना। ई लेस नेगेटिव होगी तो मतलब ज्यादा पॉजिटिव है, और ऐसा ही जेड के साथ रिलेशन। ऐसे ही हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, 2.18 इंटू 10⁻⁶ जेड बाई एन। इसका एक और इजी वे, जैसे खुद सोचो, अगर हम एनर्जी निकालते हैं जैसे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो इससे हमें आइडिया लगता है कि काइनेटिक एनर्जी इफ आई एम कैलकुलेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, है ना। वी हमें पता है जेड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है और एन पे इनवर्स। तो वी स्क्वायर का क्या होगा, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होगा। यही तो था एनर्जी के रिलेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत हमने देखे भी है रिसेंटली जब हमने जेई के क्वेश्चन किए थे। यही था ना, ये हाँ। और कल ही एक क्वेश्चन हमने जेई का किया था कि जब एंगुलर मोमेंटम हम एक इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं तो एल इजिकल टू एम वी आर, ये तो फिजिक्स में होता है ना। कि एंगुलर मोमेंटम जैसे लीनियर मोमेंटम होती है पी इजिकल टू एम वी, तो एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर, है ना।
और केमिस्ट्री में जब हम बोर मॉडल पढ़ते हैं तो ये होता है NH/2 पाई, और यही क्वेश्चन था, याद है ऋषिकेश? कल हमने ये किया था और n की वैल्यू यस 2 दी हुई सर। थी, यस सर। और उस n से हमें बहुत कुछ आइडिया हो गया था क्वेश्चन का, है ना? जी सर। तो एंगुलर मोमेंटम अगर हमें दिया हुआ है H/2 पाई में, तो उससे हमें n की वैल्यू पता होगी, और n के थ्रू, जैसे हाइड्रोजन के लिए निकालना है तो हमें पता है हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू है 1, तो n से आइडिया लग जाएगा, चाहे एनर्जी निकालनी हो, रेडियस निकालनी हो, वेलोसिटी निकालनी हो। तो बस यही था कि पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो ये हम बताता है कि कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है ना, KL, ML, ये 9th क्लास में हमने पढ़े हैं। फिर आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, या एंगुलर क्वांटम नंबर, या सेकेंडरी, या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, जो हमें एल के बारे में बताता है, सब शेल के बारे में। जो सोमरफेल्ड ने दिया था, डजेंट मैटर, कोई नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन, सोमरफेल्ड ने दिया। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि सब शेल को एक्सप्लेन करता है। जैसे सबशेल 4 टाइप के हमने पढ़ा है, उसके बेस पे 4 ब्लॉक हैं, S, P, D, F। और ये शेप को बताता है कि ऑर्बिटल की शेप क्या होगी। साइज को, ऑर्बिटल के साइज को कौन बता रहा था, मतलब ऑर्बिट के साइज को कौन बता रहा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शेप को कौन बता रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और इसमें हम एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की। एल की वैल्यू कितनी हो सकती है, जो मैक्सिमम वैल्यू है एल की, वो n-1 हो सकती है। जैसे अगर एल की वैल्यू 0 होगी तो हम एस सबशेल यूज करते हैं, 1 होगी तो पी, 2 होगी तो डी, और 3 होगी तो एफ सबशेल होती। जैसे अगर एन की वैल्यू, अगर इफ एन वैल्यू इज 1, तो एल वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि हमने क्या बोला था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू n-1, है ना? तो मैक्सिमम वैल्यू अगर एन की 1 है तो एल की मैक्सिमम 0 ही हो सकती है। तो एस ही सबशेल होगी, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, है ना? इसलिए एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं। एन की वैल्यू अगर 2 होगी तो एल की 0 भी पॉसिबल है और 1 भी पॉसिबल है। 0 है तो एस सबशेल होगी, और 1 है तो पी सबशेल होगी। तो 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए देखोगे सेकंड सबशेल में अगर हम देखते हैं तो एस और पी ब्लॉक दोनों को हम स्टडी करते हैं, तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसलिए 6 ही ग्रुप है, 13 to 18, 13 to 18। अगर एन की वैल्यू है 3, तो एल की वैल्यू 0, 1 और 2 पॉसिबल है। थर्ड सबशेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए डी के अंदर 10 ग्रुप होते हैं, और ऐसे ही एफ में 14 ग्रुप होंगे। ठीक है, अगर 4 हो जाती तो ऐसे ही 32 हो जाती, हम ऐड करते जाएंगे। एनीबडी हैव क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक? फिर से थोड़ा बता सकते हैं वो? बिल्कुल बता देंगे समरी। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड रियली वेल? कितने लोगों को बहुत अच्छे से? निर्जला, निकिता, ऋषिकेश, निक्की सारन, सपनदीप, आदित्य, सर आदित्य, आपने क्या पूछा था? कि ये अच्छे से समझ में आया जो मैंने अभी बताया है? यस सर। यस सर, आ गया समझ। ठीक है, वेरी गुड। जो अ, चलो नहीं समझ में आया? सर हाँ, तो हमने अभी तक ये समझा कि जब हम स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक एटम में कहाँ पे प्रेजेंट है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑर्बिट में है तो के, सेकंड ऑर्बिट में तो एल, थर्ड ऑर्बिट में तो एम, एन, ऐसे होता है। सेकंड, अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर है या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर है, तो हमें ये बताएगा कि उस ऑर्बिट की कौन सी सबशेल में, एस में, पी में, डी में, एफ में, है ना? बस अभी तक तो हमने यही बातें की थी। जैसे ये हम कर चुके हैं, अगर एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू 0 होगी, तो 1s ही पॉसिबल है। ये जो आगे नंबर लिखा हुआ है ये एन की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी, है ना? और
क्या बोलते हैं, हाउ प्रिंसिपल ये बताता है अगर n की वैल्यू सेम हो तो एनर्जी इस हिसाब से होती है, सबसे ज्यादा F की होती है और सबसे कम S की। क्यों? क्योंकि L की वैल्यू उनके लिए कम होती है। आगे बढ़ते हैं। Jordan, am I audible? Yes, I'm sorry for joining late. It's okay. So we are doing Haber principle. Haber principle in chemistry say that energy of any subshell will be decided by n plus L value. N plus L value less, energy will be less, will be filled first. Example. In this case, n value is 1, L value is 0. So total value n plus L 1. Here n plus L 2. Wherever you have less number of n plus L, this will be filled first. जहां पे n plus L की वैल्यू सबसे कम होगी उसको पहले भरेंगे सबसे में। इसलिए अगर हम एनर्जी ऑर्डर को देखें, so we have to fill 1s first. If we have to fill, we fill 1s. Correct. Example here, if n value is 3, 3 possible value is this. Correct. So 3s is possible if L 0, 3p and 3d. Correct. Next is the orbital angular momentum. Orbital angular momentum is calculated based on the value of L. H upon 2 pi is common. So if you want to calculate this, the simplest way is you should know what is the L value. आपको पता होना चाहिए कि L की वैल्यू क्या है, तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बता सकते हैं। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बता सकते हैं। एग्जाम्पल अगर if we have p subshell, तो tell me everyone what is the angular moment, orbital angular moment for p subshell. For p subshell, L value is 1. Yes, sir. 1 minute guys. So guys, tell me your answer. For p subshell, what will be orbital angular momentum? बताओ कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? H by root 2 pi. L value is 1, L plus 1 2, so under root 2. Answer will be under root 2 H upon 2 pi. For D, it will be under root 6. And D question already asked in NEET exam. Okay. If you ask for D subshell, L value is equal to 2 and this will be under root 6. This was the exact question. This was the exact question in NEET exam. For 3D subshell, what will be orbital angular momentum? किसी को doubt? Anybody? Anybody have doubt? No, sir. No, Shape sir. of the orbital. Very good. तो shape of the orbital हमने बोला था, we said कि azimuthal quantum number will tell you the shape of the orbital. azimuthal से हमें पता चलेगा
So if you talk about S subshell, it is spherical in shape. P dumbbell shape. D double dumbbell shape, and F complex shape. These are the four shape of each subshell. Correct. So as you can see here, this is spherical shape for S, dumbbell shape for P, two time dumbbell for D. Correct. Double dumbbell, two time same dumbbell, and F very complex. Done. Next is magnetic quantum number. Also explain the orientation of the orbital, position, 3D shape. Like shape is done, how the orbital are placed, orientation, electron cloud. Correct. In the influence of magnetic field. Correct. Because we know each subshell made up of some orbital. Example, F subshell have 2 electrons, so 1 orbital. P subshell have 6 electrons, so 3 orbital. D have 10 electrons, so 5 orbital, and F 7 orbitals, so 14 electrons. So these are fixed, right? It is fixed. Okay. But M value is not fixed. M value can be vary from minus L to plus L. Minus L2 plus L. Minus L2 plus L. Example, if let's take this one, the N value is 3. N value 3, so N L value can be 0, 1 and 2, right? If L value 0, S, if L value 1, P, and if L value 2, D. Correct? If S value 1, so M will be 0, 1 orbital. If L value 1, it will be minus 1, 0 plus 1. Total number of orbital 3. Correct? If L value 2, minus 2, minus 1, 0 plus 1 plus 2. Total number of orbital 5. That's why 5. Correct? So how many orbital will be present in N value 3? Total 9. 1 plus 3 plus 5. Anybody have question? किसी को कोई डाउट हो तो बेझिझक पूछो. So the साइड में n equal to 3 क्यों लिखा है? N is equal to 3 है, वही तो है ना कि N की वैल्यू अगर 3 है तो what is the possible maximum value of L? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2. Because maximum value of S, Okay. maximum Side is of N the minus 1. quantum number. Correct. If N value 4, then L value maximum is 3. तो number of orbital vary हो जाएंगे. Any doubt? So what is the number of orbital in a shell? We just calculated. If N value is 3, number of orbital थे 9. So number of orbital N square. Electron double of orbital. That's why multiply with. Because each subshell, each orbital have 2 electron. That's why number of electron is double of orbital. समझ में आ रहा है सबको? Raise your hand if you understood everything. Aditya, yes. Nikita, Prince, Nirzila, Jordan, Rayan, Sonam, Rishikesh, साहिल. Sahil, खुशी, निकी, एंड बचे हुए लोग. सपनदीप नहीं है क्या? सोनम, निकिता, तो दिस इज द थिंग कि जैसे n की वैल्यू 1 है,
So L possible value is 0. If L possible value is 0, it will be 1s. 1s number of orbital only 1. 1 orbital, so 2 electron. N value 2. These 2s. So 1 orbital and 3 orbital. Total 4, 8 electron. So number of orbital is n square. Electron double of orbital. Anybody have question? Spin quantum number given by this scientist. I don't care about the name. स्पिन क्वांटम नंबर टेल द डायरेक्शन की इलेक्ट्रॉन घूमेगा कैसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव. क्लॉकवाइज स्पिन अप एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन डाउन. इसका मतलब ये है कि टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन ऑर्बिटल कैन नॉट हैव सेम स्पिन क्वांटम नंबर. पहले right, so that's why this is correct and both these two are wrong. Correct? Any doubt? Why? Both are opposite. If one clockwise, second clockwise. If one clockwise, next anti-clockwise. Right? What is the number of orbital in subshell? Subshell means L. So how do we know this formula is correct? तो हम करके देख सकते हैं. कैसे? If L value is 0, तो 0 है तो मतलब S subshell. What will be the number of orbital in S subshell? 2. L value 0 plus 1 is equal to 1. If L value is 1, तो ये होगी P subshell. तो what will be M value? 2 multiply by 1 plus 1, 3 orbital. P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 orbital होते हैं. If L value is 2, D orbital, M 2 2 जा plus 1, total 5 orbital. Any doubt? So this formula is logical. Never remember formula directly. Try to put some value. It will look easy. कभी भी सीधा फॉर्मूला याद रखने की कोशिश मत करो. उसमें वैल्यूज पुट करो, देखो कि वो लॉजिकली सही है क्या, आसान लगेगा और याद रहेगा नेचुरली. ठीक है. तो इफ m is equal to 12 plus 1, this plus 1 will go to another side, so minus 1, and this 2 will go to another side. This, that's why we wrote like this. किसी को कोई डाउट हो इसमें तो भेज दे. Anybody have doubt, let me know. And if this is the number of orbital, if this is the number of orbital, what will be the number of electron? Double of this. That's why what you did in this case, क्या किया हमने कि हमने जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, ऑर्बिटल थे, उसका डबल कर लिया. We did double of the orbital. Double of the orbital. 12 become 4l. It will become. Any doubt, guys? No, sir. And I mentioned multiple time in class. मैंने बहुत बार बताया कि सिर्फ क्वांटम नंबर जितनी देर में हमने किया है वहां से एक क्वेश्चन नीट में बनता है. एंड इट टेक ओनली हाफ एन आवर टू फिनिश द टॉपिक, है ना. नोड. व्हाट इज नोड? नीट 2025 क्वेश्चन. नोड वेयर वी कैन नॉट फाइंड इलेक्ट्रॉन. जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकते वो नोड होते. नॉर्मल फॉर्मूला ऑफ द नोड इज n-1. नॉर्मल फॉर्मूला ऑफ नोड is n-1. Simplest way. Node are two type. कौन कौन सी दो type? First, radial node. What is Radial node? node is the place where you cannot find electron. जैसे Ryan, if you take like this, I will draw it again. Look at this. Tell me, at this point, can you find any electron?
because it's just pinpoint. No, sir. You might find electron in between the cloud, right? Cloud के अंदर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बट Sir. यहाँ टिप पे तो नहीं होंगे, है ना? No. तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर ये नोड है. So The node is position. the place. Yes, node is the place where you cannot find electron, any electron. जहाँ पे चांस ही नहीं है इलेक्ट्रॉन मिलने के. तो रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड और नोडल सरफेस को हम निकालते हैं n minus l minus 1. So along with the shell, subshell will also decide where you can find electron. Example, if you say in case of 1s, तो n की वैल्यू 1, s वैल्यू sorry l value for s 0. What will be number of radial node? n1 l0 minus 1. What will be the value? 0. It means in case of s subshell, there is equal distribution of electron inside the sphere. कि s सबशेल के अंदर इक्वल चांस है कि कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं. We can find electron anywhere, so that's why इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल. तो कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते. There is no place inside the s subshell where we cannot find electron. That's why radial node or spherical node or nodal surfaces. Anybody have question? If not, second is angular node. Angular node is also known as nodal plane, and it is equal to L. Even in this situation, L value is 0 for 1s. तो एक बार और रिपीट कर दिएगा. हाँ, तो निर्जला नोड वो प्लेस होता है जहां पे चांस ही नहीं है कोई इलेक्ट्रॉन मिलने के. So it is the place where we cannot find any electron. Normally node का फॉर्मूला होता है n minus 1. So n value will decide the number of node, है ना? तो nodes are two type, radial and angular. Radial and angular. रेडियल नोड को हम स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं कि स्फेरिकल सरफेस के ऊपर कितने चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन, कितने चांस है कि इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे. We will not get electron. So what are those possible places? So that is radial node. तो इसका फॉर्मूला होता है n minus l minus 1. Again, if we remember formula, it's very difficult. But if we apply formula for 1s, so understand for 1s it means n value 1, for s l value 0. Formula is n minus l minus 1 for radial node. Correct? For radial node. Now tell me n value 1, l value 0. So what will be the total number of radial node? 0. What does it mean? It means in spherical surface there is equal distribution of electron. There is no place inside the spherical surface where electron is not possible to find. What my point, Nirjala? समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट इज एंगुलर नोड, इज आल्सो नोन एज नोडल प्लेन. तो ये एल से रिप्रेजेंट होता है. जैसे इन दिस केस फॉर एस एल वैल्यू इज 0, सो एंगुलर नोड इज आल्सो 0. नो प्लेन, ओनली स्फीयर, नो प्लेन, नो like nodal plane or angular node. So how to calculate total node? Total node is radial plus angular. Radial is n minus l minus 1, angular is l, total n minus 1. अब देखो इसमें अगर if somebody asks what is your total number of node for 3p, n value is 3. So what will be the total number of node? 3 minus 1, 2. Any doubt? For 3p, number of node will be this. 3p calculate out of 2. How many radial? How many radial is n3, l1, this 1. 1 will be radial, so 1 will be angular. Right? Angular is n minus, angular is l. L is equal to 1.
तो ये जस्ट न्यू फॉर्मूला था, एक टाइप का न्यूमेरिकल था कि व्हाट आर द पॉसिबल आंसर। एनीबॉडी हैव क्वेश्चन? सर एल को आपने 1 लिया है। हाँ, क्योंकि पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है ना, अभी हमने यहाँ पे किया था। हाँ सर, हाँ, मेरे को लगा पी है तो हाँ सर। नहीं, तो एल वैल्यू 0 S1, एल वैल्यू 1 तो पी, तो फॉर पी एल की वैल्यू 1 है, तो इसलिए मैंने ये लिखा। ये बस न्यूमेरिकल था, थ्योरी का पार्ट ये नहीं है, बट थ्योरी इज बोरिंग इफ वी डोंट सॉल्व क्वेश्चन। ओके, so in the case of nucleus we never consider any node because there is no electron as such, but everything is concentrated. Like neutron is kind of combination of electron and proton, so we never consider nucleus as node. Any doubt, guys? No, sir. No, sir. Very good. So सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? All of you are able to understand properly? Yes, sir. Raise your hand. Rishikesh, Nirjala, Aditya, Nikita, Prince, Yes, Barinder, sir. Sonam, Jordan, yes. Nikki, yes. Barinder, yes. Already said. Manan, Yes. Sahil, yes. Devans, Yes, sir. yes. Khushi, Nikita, Sara, and I forgot your name again. Suresh Dhul. आपका नाम क्या था? सलोनी. Loni, yes, हाँ, sir. okay. So we are almost done with this topic. Above principle and this small topic are left. So we will secure one question. देखो, if L value is 0, then M value will also be 0. Why? Because M value is from minus L2 plus L, correct? So if L value is 0, M value is also 0. It means it is S subshell. S subshell is spherical in shape. In case of 1S, there is no node because equal distribution. In 2S, you can see one node between the two planes. This around this part, correct? This is one node. In 3S, there are two nodes. One is this, second is this. Correct? Correct? So number of node will be decided by n value. Why? Because we know node formula is n minus 1. In this case, n value is 1, that's why 0. Here n value is 2. So total number of node will be 1. Here n value is 3. Total number of node will be 2. 1 less. Correct? Correct. So if question asks you which s orbital have bigger size, n value is bigger, size is bigger, as simple as that. More n, bigger size. तो जितना बड़ा n की वैल्यू होगी उतना बड़ा साइज होगा. S subshell done. P subshell. For P subshell, L की वैल्यू होती है 1. L value is 1. So M value can be minus 1. It can be 0. It can be plus 1. So total 3 orbital. What are those 3 orbital? P in x-axis, y-axis or z-axis. We said P subshell is dumbbell shape. Correct? Dumbbell shape, dumbbell shape. Correct? This is nodal plane. This one, this part, nodal plane, and you have two lobe, dumbbell shape, two lobe. Whenever we write nodal surface, we are talking about radial node. तो ये हम already we mentioned this. कि radial node is nodal surface. Angular node is nodal plane. Same thing we wrote here. Plane is angular. Correct? So in p orbital, there are 3 orbital px, py, pz. Plane will be in the other side. Yz. If
electron are present in x-axis, it means they are not present in y or z-axis. If electron present in y-axis, तो वो z-axis और z में और x में possible नहीं. Correct? Based on that, you can calculate. Any doubt, guys? No, For sir. d orbital, we have L value 2. Total 5 orbital are possible. And full chapter D and F below we have based on this. है ना? पूरा chapter ही है D and F. And all the orbital are not identical. Even in crystal field theory, coordination compound. हमारे पास यही तो topic है. In crystal field theory, we have same thing. If d orbital present in x or y axis, this example one in x, another in y. YZ, ZX. Correct? XY, YZ and ZX. Fourth, x square, y square along the axis. पहले तीन between the axis present थे. First three were present between the axis. Fourth and fifth are present along the axis. Correct? Fourth and fifth are present along the axis. Correct? What is the total number of the surface, nodal surface? Nodal surface means the radial node. और radial node का तो formula हमें पता ही है. Nodal surface means radial node and we know radial node formula. No need to remember any other thing. अच्छा ये एक बार नीट ने क्वेश्चन पूछा था. If m value is 0, ये dz square के लिए होती है. This is for dz square. Again, so first is xy, then yz, then zx. 0 is for dz square. In d सबशेल हमारे पास है टोटल 5. सबकी इक्विवेलेंट एनर्जी होती है स्टार्टिंग में, बट एज लाइगेंड अप्रोच वी नो कि these 5 ऑर्बिटल विल स्प्लिट इनटू 2 पार्ट इन ऑक्टाहेड्रल कंडीशन. अगर 6 लाइगेंड है, इफ वी हैव 6 लाइगेंड, इट विल स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, T2G and EG. Correct? If we have ligand, it will split into T2G and EG. This is again rule what we revised. Radial node, this. Angular node, this. Total node, this. Okay. Question can be asked. What will be the total number of radial node? Calculate total number of radial node for 3D. Radial and angular node. Radial node, angular node, and total node for 3D. Calculate, all of you. Send me your answer. Calculate total number of radial node, angular node, and total number of node for 3D. जो 5 लोग निकला है, ठीक है. अगर बहुत ज्यादा एनर्जी हुई तो वो टूट भी सकता है. तो 3 और 2 का रेशियो टूट सकता है. 3 का यूनिट अलग है, जो 2 3 3 आना है T2G का है, तो 2 आए ऑर्बिटल है G का. राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स. सबको चैट बॉक्स में यहाँ पे आंसर लिखना है. चैट बॉक्स. गुड इवनिंग सारा. You can see formula also. All of you write quickly. जल्दी जल्दी लिखो. Angular node 2, radial 0, total 2. Nikita 202.
Jordan 202, Angler 202, 202 Nikki, Sonam 202. सबको आंसर लिखना है, मैं चेक करूंगा. नंबर ऑफ पीपल 202. रेडियल 022, प्रिंस 202. तो total number of people in group I think are 15, 16. And how many answer I got? ठीक, चाय पी रहे हो तुम? प्रिंस 1, सारा 2, साहिल 3, सोनम 4, निकी 5, Rayan 6, Jordan 7, Nikita 8, Aditya 9. Only 9 people answered out of 16. सॉरी सर, मुझे कॉल आ गया था इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं देख पाई। कोई बात नहीं, दोबारा दिखा देते हैं, जल्दी करना. 3D के लिए एंगुलर नोड, टोटल नोड और रेडियल नोड निकालनी. So all of you answered कि n value is 3, L value for D subshell is 2. तो total node 3 minus 1 2, angular node or nodal plane L value 2, and radial node as you mentioned 3 minus 2 minus 1 0. तो सबके आंसर एकदम परफेक्ट थे. ठीक है. रेडियल 0, angular 2, total 2. This topic is completed. Last topic is how to fill electron. जैसे लिखते हैं ना 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. How to fill? So there are 4 rules. Half-bow, n plus L rule, Hunt's maximum multiplicity principle and Pauli exclusion principle. Half-bow is German word जिसका मतलब होता है कि we are building up. The meaning is building up. So we fill electron in subshell based on their energy level. If we have minimum energy, we'll fill first. अब बेसिक वही रूल है कि जिस इंसान को सबसे कम चीज चाहिए पहले उसको दिया जाता है. If you have least requirement, your requirement will be fulfilled first, है ना. तो minimum energy fill first. So the same rule. You know this rule. First 1s, then 2s, then 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s1, like this. Right? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, है ना. Like, but कुछ exception है and this is need 2025 फिर question. इसको याद कैसे रखना? याद कैसे रखना है? मुझे तो आदत हो गई है, अगर याद नहीं होता है तो फिर मतलब यही पैटर्न करना है. पहले 1 to 7 लिखते हैं हम ऐसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ऐसे मतलब सीक्वेंस होता है. ओके सर. ठीक है. अगर ये है कि याद नहीं हो रहा है तो टेल मी, तो मैं उसके ट्रिक बना दूंगा जरूर. आगे क्रोमियम एंड कॉपर आर एक्सेप्शन बिकॉज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ये तो है. दिस वन इज noble gas configuration. It should be 4s2, 3d4, but it is this. Why? Half-filled orbital are highly stable. Same full-filled orbital are highly stable in case of copper, and we know this. Correct. जो भी लास्ट शेल होती है, लास्ट शेल इज अल्टीमेट शेल, and one shell before last shell is penultimate shell or prevalent shell. This is valence shell, outermost shell, or ultimate shell or outermost shell. Second rule is n plus L. कि wherever you have n plus L minimum, you will fill electron first. है ना. तो फर्स्ट हमें ये देखना है कि n plus L की वैल्यू मिनिमम कहाँ पे है. If n plus L is same,
then wherever you have n value high, then it will be filled first. Like it will have high energy. N value high, energy will be high. जैसे in 3D, n value 3, and 4D, L value 2. Total number 5. 4, 4P, n value 4, and L value 1. Total 5. So n plus L rule is same. So which one will have more energy? The subshell that have high n value. Understood? जिस सबशेल की ज्यादा n value होगी, that will have high energy. Okay. For hydrogen atom, because in hydrogen we have only one electron, and only this one electron, क्या बोलते हैं, energy depend only on n, not on L. जैसे हम देखते हैं ना in Bohr model formula. अच्छा Jordan, what is the energy formula for Bohr model? Minus 13.6 Z square by N square. unit electron volt per Electron atom. volts per atom. Yes. Electron volt per atom. So in this case, we know energy inversely depend upon the n, right? It does not depend upon L, because Bohr model applied for the hydrogen atom, one electron system, right? Jordan, make sense? Yes, sir. So that's why if we see this, if n value is same for one electron system, if n value is same, then energy will be same. If n value is same, energy will be same. Correct? Here energy 3D total number 5, 3 plus 2. 4s total number is 4, so 3D will have more energy. That's why we fill 4s. तो रेयान, जब तुमने पूछा था ना कि सर ये कैसे याद रखेंगे, याद नहीं रखना है, इसमें हमें बस देखना है कि सीक्वेंस क्या आएगा, और वो सीक्वेंस n प्लस एल रूल के बेस पे हम बता सकते हैं. कोई डाउट रेयान? Okay, sir. आगे हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, विच से दैट कि फर्स्ट विल फिल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल देन फुल फिल्ड ऑर्बिटल. हंस हाफ, तो first half orbital then full orbital. First half orbital then full orbital. Any doubt? First half orbital then full orbital. And half. And half. And H for hand, H for half orbital. First half orbital then full orbital. So first one is wrong because half orbital are not fulfilled. Second one is correct. Why? First you fill half orbital then pairing start. Any doubt? And last law, Pauli exclusion principle. It's saying that कि two electron can in single atom can not have all quantum numbers same. क्यों? At least spin quantum number is different. Spin quantum number तो अलग होगा. जैसे two electron present in S subshell, so their n value, L value, M value is same, but two electron will have opposite spin. One is clockwise and another is anti-clockwise. So Pauli said two electron cannot have exactly same quantum number in the same atom. Within the same atom, same value is not possible. Why? Because one orbital have two electrons, both will have opposite spin. This is not possible, this is not possible, this is possible. So if one is clockwise, another will be anti-clockwise. And you might ask questions. एक question मन में आ सकता है कि sir, how to identify which one is half, positive half, which one is negative half? तो कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव? आंसर इज वी कांट टेल विच वन इज पॉजिटिव, विच वन इज नेगेटिव. वी कैन टेल कि अगर
अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव. इफ वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव, बट वी कैन टेल विच वन. अंडरस्टूड? एनीबडी हैव क्वेश्चन? Let me finish this topic and then Planck quantum theory. Then this topic will be done. Magnetic moment is not given in this chapter, but one word is mentioned, and we have the same topic in 12th class D and F block and coordination compound. तो यहाँ पे तो नहीं है, but दोनों चैप्टर में है. तो दोनों चैप्टर में है तो we have to read. Formula, magnetic moment formula is n plus 2 under root Bohr magneton. What is n? Number of unpaired electron. If you have even number of electron, it can be paramagnetic or diamagnetic. But if you have odd number of electron, always paramagnetic. Okay. If even number of electron, it can be diamagnetic or paramagnetic. How should I ask? बरिंदर, कोई ऐसा मॉलिक्यूल बताओ मुझे कि जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद भी वो पैरामैग्नेटिक है. होना तो नहीं चाहिए बट है ऐसा कोई कंपाउंड. सर कोबाल्ट. Even number of electron but paramagnetic. Very popular example from chemical bonding is oxygen and B2. इन दोनों में even number of electron है, उसके बाद भी this is paramagnetic, and this paramagnetic nature is explained by the this. Paramagnetic behavior is explained by the MOT, molecular orbital theory. Any doubt? Done. MOT. And how these O2 and B2 is paramagnetic, I will explain this in MOT. मैं बताऊंगा अच्छे से MOT केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में. ठीक, यहाँ पे ज्यादा खिचड़ी बन जाएगी. Will get like everything will be messed up. How should we know what is the total number of unpaired electron? Example, manganese. First, we should know what is the electronic configuration. So all these 5 orbital are unpaired. That's why n value in this case will be 5. Correct? In this case, total number of electron in d orbital is 7. In 7, what will be the number of? If you have 7 electron, तो सलोनी कितने unpaired electron होंगे? How many unpaired electron will be there in 3, 7? 1, 2, 3, 4, 5. Hunt's rule says that ki first half filled, then full filled, 6, 7. So what is the number of unpaired electron? Saloni. Okay. Saloni, any doubt? Anybody have question? How should I count the total number of unpaired electrons? So how to explain generate these orbital is the orbital that have same energy, and topic is done. Is done. Now I explain 10 question from this topic. So anybody ask
question. Send me your notes. गुड क्वेश्चन कि जो बहुत हाई हैवी एलिमेंट होते हैं, इन दैट केस वी डोंट नो हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो उसका भी आंसर बता देते हैं. फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज द नोबल गैस कन्फिग्रेशन. पहले तो हमें नोबल गैस कन्फिग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए और नोबल गैस पता होना चाहिए. हीना ने अड़कर जिया को हीना ने अड़कर जिया को रुलाया. करेक्ट. सो एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 10, डिफरेंस ऑफ 8. एटॉमिक नंबर 18, डिफरेंस ऑफ 8. एटॉमिक नंबर 36, डिफरेंस ऑफ 18. एटॉमिक नंबर 54, डिफरेंस ऑफ 18, मैजिकल नंबर डिफरेंस. एटॉमिक नंबर 86, डिफरेंस ऑफ 32. आदित्य, यहाँ पे कोई डाउट? नो सर. हाँ, तो पहले तो हमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए नोबल गैस के. अब जो आसपास के एलिमेंट होते हैं उसके लिए हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप क्या है. जैसे हैली ने की रब से फरियाद, तो इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक नंबर है यहाँ पे होगा 1, 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87. तो यहाँ पे जो फर्स्ट शेल हो गया ऐसे होगा 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1. तो इफ आई वांट टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीजियम, तो मैं क्या करूंगा? टोटल इज एटॉमिक नंबर 55, so I will write xenon 6s1. Done. अब आसान लग रहा है आदित्य? हाँ जी सर. पूरा नहीं लिखना हमें, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम में ये चीजें जरूरी होती है. नीट एग्जाम में वो बहुत स्पेसिफिक पूछते हैं, है ना. एग्जाम्पल, इफ वी आर डूइंग फॉर द ये लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड में अगर हम देखते हैं तो जैसे सीरियम की पूछ लें या किसी और की लेंथेनॉइड की पूछ लें, तो हमें पता है कि जो भी होगा जेनून तो एटलीस्ट पहले आएगा ही. एंड इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 4f सबशेल 5d एंड 6s, बस ये कॉमन होगा. करेक्ट. इफ वी टेक एक्टिनॉइड तो रैंडोन तो होगा ही, 5f 6d 7s. वो काउंट कर लेंगे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ, डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर. बताओ, अब इजी लग रहा हाँ जी सर. है? ये फिक्स है फॉर एनी लेंथेनॉइड. दिस इज फिक्स की जेनोन प्लस दिस, एक्टिनॉइड रैंडोन प्लस दिस. तो ऑल ऑफ यू सेंड मी योर नोट्स. सब अपने नोट्स भेजो मुझे, इधर इन ग्रुप और पर्सनली. I'll check that this is a kind of break for मोस्टली लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसलिए see, अब ये देखो, देर आर टोटल, दिस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन. टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4. टॉपिक 4 इज क्वांटम नंबर. कितने क्वेश्चन है? 39. रिमेनिंग क्वेश्चन 42. तो रिमेनिंग चैप्टर में से 42 क्वेश्चन ओनली फ्रॉम क्वांटम नंबर 39 क्वेश्चन. तो कैन यू से इट इज ऑलमोस्ट 50% Yes, sir. of the chapter. And questions is like, see, the most recent question. Jordan, Yes what sir. is N?
N stands for Size of, size of orbital, L stands for shape of orbital, yes, and ML stands for orbit orientation of orbital, and spin of orbital is MS. है ना? This, Done. huh. Now look at this notes. Spin quantum number, direction of electron spin. It tells us magnetic quantum number, orientation of the orbital. Azimuthal quantum number, shape of the orbital. And principal quantum number, size of the orbital. Done. Yes, sir. Second, Rishikesh. Nm is the number of permissible value of magnetic quantum number for a given azimuthal quantum number. L is Relation between and the number of permissible values of magnetic quantum number. Sir, D option. Think. any doubt? So answer will be D. And so look at this. Look at this. Real. I gave this formula. I still remember Yes, sir, you gave it. this. Number of orbital in a subshell m is equal to 12 plus 1 or L is equal to m minus 1 by 2. यही question था. What is the number of, what is the value of L? Same question. Third, Barinder. Incorrect statement. Incorrect statement. All 5D orbital are different in size when compared to 4D. Correct. 5D, 5D orbitals are bigger than 4D orbital. Correct. 5D is bigger than 4D orbital. All 4D orbital have similar in shape to the 3D. This is correct. Shape is similar. Size is bigger. Shape remains same. Double dumbbell. Shape remains same. Double dumbbell. In an atom, all the 5 3D orbital are equal in the free state. Free state, this is given in your crystal field theory. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने पढ़ा है ना कि फ्री स्टेट है, गैसियस स्टेट है, लाइगेंड आएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, इक्वल एनर्जी, डीजनरेट ऑर्बिटल. डीजनरेट ऑर्बिटल मींस इक्वल एनर्जी. And last, shape of dx, y, yz, zx are similar to each other, correct? And dx, y, dz square are similar to each other. No, these two are not equal to. First three are equal. Q. Look at the diagram. Shape of the d orbital. See. First three, dx shape, dy, z and dzx shape is same, correct? Dx square, y square and dz square look different. Dz square look different. Varinder, any doubt? Varinder? Next, Aditya. You have this orbital arranged in the decreasing order. What is the rule? N plus L. N plus L high, energy high. Correct. For S, L value is 0. For P, L value is 1. For D, L value 2. And for F, L value 3. Aditya. 5, D, 3, total 8.
6p, 7, 5p, 6, 4d, 6. Correct. So it means Pakka 5f will be maximum, then D part होगा 6p. अब out of 4d and 5p कौन सा ज्यादा होगा? Higher value, higher energy, and value 5 is greater than 4. कोई डाउट आदित्य? Nikita, fourth question. Number of angular node and radial node in 3s. Nikita, A option, sir. correct. L value is 0 for s. That's why angular node 0, radial node n value 3, L value 0, so it will be 2. A. Sara, you have 3 angular node, 3 radial node, total node. Angular node 3, it is equal to L. So which subshell? So 4F. Very good, because for F, L value is 3. Done. Then Sonam, correct order of increasing energy listed in the titanium. 3D, 3 plus 2, 5. 3P, 3 plus 1, 4. 4S, 4 plus 0, 4. And 3S, 3 plus 0, 3. Increasing order. Sonam, any doubt, Sonam? 5, 4, 4, 3. Sonam, are you there? There are only 10 people. Aditya, Devans, Jordan, Khushi, Nikita, Nikki, Ryan, Rishikesh, Sara. Devans, this question, 13. Angular momentum for the d orbital. Devans, any doubt? Yes, sir. कोई doubt? नहीं, sir. Sara, 11th. How many electron can fit in orbital for which n value is 3 and L value 1? N value 3, L value 1. Sara, Sir, option C. why? N remains same. N value 3, 3. L value 1, P. Correct? 3p orbital we are talking about. In 3p orbital, electron should be 6 logically. But it is asking in one orbital. In any one orbital,
electron is always 2. In one orbital, electron is always 2. Any doubt? So could you just repeat that again, sir? Jordan, in one orbital, there are only 2 electrons. And they are asking how many electron in one orbital. In the orbital. Okay, Not yes, yes. orbitals. Orbital, not orbitals. Jordan, 10th question. Which of the following pairs of d orbitals will have electron densities along their axes? Option C, sir. Yes. Dx square y square is this. And dz square is this. Z axis. It's always along the axis. Correct. Rishikesh, 9th question. The spin quantum number. 2 electrons occupying the same orbital are distinguished by spin quantum number. Yes, sir. Tell me, guys, how are the question from this topic? Sir, very easy, sir. Very easy. Topic was very easy. Yes, sir.